Good morning, students. Again, we are here and we are going to study the second and last topic of the third chapter, personal pronouns. And the name of the topic is correct use of personal pronouns in comparison. What do you mean by comparison? When we compare a person to other one, that should be known as comparison. We know that in comparison is used for adjective. Adjectives are used in 3 degrees. First one positive degree, second one comparative, and the third one superlative. So we always make very common mistake while using a personal pronoun in comparative degree. Suppose he is better than me. Generally, we use such kind of sentences. Rakesh loves you more than me. Rakesh loves you more than I. If we are going to just think about which one is correct use, so you can just think that he is better than me is correct or not. He is better than I. Which one is correct one? This is we are going to talk about in this topic. So remember one thing. Whenever you are going to use a personal pronoun, while there is comparative degree of adjective or positive degree of adjective or superlative degree of adjective, you must remember that particular personal pronouns is compared to whom. इसको कंपेयर हम किससे करते हैं? क्या इसको हम सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं या इसको ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं? इफ वी आर कंपेयरिंग इट विद सब्जेक्ट, तो वी हैव टू यूज कंपेरेटिव डिग्री एज सब्जेक्टिव डिग्री, एंड इफ वी आर गोइंग टू यूज इट टू objective case to the object, we have to use objective case of that particular pronoun. जैसे मैंने बोला, 2 एग्जाम्पल मैंने दिया, he loves you more than me and he loves you more than I. अगर हम बात करें कि कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, तो हम बात करेंगे कि ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, बट दोनों के सेंस बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें he loves you more than me, it means कि comparison is between you and me and the subject is the one, he, means he loves you, he loves me, but he loves you more. Similarly, अगर आप बात करते हो कि he loves you more than I, it means कि मेरा कंपैरिजन ही से हो रहा है ना कि तुमसे. He loves you, I love you, but he loves you more. He takes care of you more than me. He takes care of you more than I. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? He takes care of you more than I कहने का मतलब क्या हो गया कि I has been compared to he, और more than me कहने का मतलब क्या हो गया कि me has been compared to you. सिंपल सी लॉजिक है कि अगर जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो जिस केस में है, नेक्स्ट पर्सन प्रोनाउन की का भी केस सेम होना चाहिए. यही चीज इस टॉपिक के अंतर्गत है, नथिंग मोर देन दैट. मतलब कि मैं आपसे उससे ज्यादा प्यार करता हूं, तो इसका क्या मतलब होता है? वह राकेश को मेरे से अधिक घृणा करता है, तो ही हेट्स यू राकेश,
ही हेट्स राकेश मोर देन आई, इसका मतलब हो गया कि आई हेट राकेश, ही हेट्स राकेश बट ही हेट्स मोर। और अगर मैं बात करूं कि ही हेट्स राकेश मोर देन मी, तो यहां पे मतलब क्या निकल जाता है, ही हेट्स राकेश, ही हेट्स मी बट ही हेट्स राकेश मोर। This is the thing. Now you have to just go through the exercises, do the exercises, and after completing the exercises, we will take care the solutions of those exercises in the next chapter. Thank you very much. Have a nice day.